लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our new series on elections, Lok Nirnaya 2024. In this program, we will bring you election-related developments, various updates and analysis of general and assembly elections 2024. I am Vinay Kumar with my co-anchor Vishal Sharma. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे और साथ ही मतदाता जागरूकता पर भी करेंगे बात। और इन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए हम स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ साथ अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय राउत जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। Here are the headlines this evening. Election Commission issues notification for first phase of Lok Sabha election. Election Commission allows postal ballot for essential service employee in upcoming elections. Jan Adhikar Party announces merger with Congress. लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मियों के लिए डाक मतपत्र को स्वीकृति दी। और बिहार में जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। सबसे पहली खबर, निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5 सीट, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की एक-एक सीट के लिए भी चुनाव होगा। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा। Election Commission has allowed postal ballot for essential service employee in upcoming elections. In view of the Lok Sabha elections and assembly polls in 4 states, Election Commission of India has notified the category of electors mentioned for the purpose of facility of voting through postal ballot as absentee voters in the category of persons employed on essential services. The list includes the employees of Metro, Railways, BSNL, Electricity and Health Departments, Fire Services, Postal Services, Aviation, Disaster Management, Doordarshan and Akashvani, as well as media persons authorized by the Commission for polling day coverage, among others. The Commission said that as per the provisions of the Representation of the People Act 1951 and on due consideration of the matter, it has notified the persons employed in the essential services as a class of persons to cast vote by postal ballot on being on duty on the day of poll in the current general elections and legislative assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim, and by-elections in 26 assembly constituencies in 13 states. राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और मोहन प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पार्टी का विलय किया। इस अवसर पर राजेश रंजन ने कहा कि वे अब कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। Akshay ji, you heard the headlines with us. Now the most important thing is that notification for the first phase of Lok Sabha elections, the first phase will be held on April 19, has been issued, and the most number of Lok Sabha seats, 102, will go to polls. So how does this machinery start rolling, as you have been associated with Election Commission for so many number of years, such a long time? So how does this machine start rolling out now? Well, Vinayji, if you are talking about the machinery rolling, it actually started rolling the day it was announced, the elections, the 16th of this month. And from that time onwards, the model code came into effect. In fact, please allow me to go even behind 2 years. In fact, the machine for preparation for this mega event of the world, if I'm allowed to say so, began 2 years back.
it doesn't happen that 543 constituencies involving about 1 billion electorate with 10.5 lakh polling stations, it happens just overnight. It requires a lot of preparation, a lot of briefing of each and every field official, lot of training, lot of, they have 36 chief electoral officers across, consultation with political parties, all stakeholders, central agencies. So actually, the ball has started rolling from that. But what you mentioned just now is about the notification. These are certain implications under the RPA Act. As you very rightly said, the first phase has the maximum number of seats. In fact, it is interesting to tell the audience that the first 4 phases constitute almost 400 seats. The remaining 143 seats are in the 3 phases later on. So it is very thick in the first 4 phases. So in a way, once the nominations start, the political activism is much more. And so to that extent, the election commissions look at procedures and rules being followed is much more. The returning officers, the district election officers, they all become very activated. The people on the ground, the field level agencies, particularly those who monitor things like expenditure control, model code violation, they become very active. And commission has to, if it had 2 years till now, it will have to have 20 years in the coming days to come, because it's definitely going to be a very intense affair. You and I, we would recall that one of the outcomes that Election Commission of India has set for itself is to have a clutter-free election. But it's a very optimistic scene. I'm sure that there is going to be, as the election proceeds from now on, there will be some amount of noise, avoidable noise, legitimate noise, illegitimate noise, but how these are all sort of brought to track and kept on the right side of the law, that's for the election managers to see. And after all, in India, it is the world's largest electoral exercise, which we'll be witnessing in the coming Lok Sabha elections. Bilkul. The world is having more than 5 dozens of elections now. We had elections in the neighborhood. We know what happened there. We know what happened in Bangladesh, opposition boycott. We have seen Pakistan, what happened. And Russia had the election of its own type. The American election, which will come much later in the year, is still to be free from its earlier election. And now the new election has become already very abusive even before it started. But the whole world is looking at the Indian election because in the size and complexity, unmatched. जी अक्षय जी, पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होना है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होना, और हम देख रहे हैं कि इन पहले चरण में उत्तराखंड की भी सीटें हैं, पूर्वोत्तर की भी कुछ सीटें हैं जिन पर कि पहले चरण में चुनाव होना है। और ये जो राज्य हैं, खासतौर पर पूर्वोत्तर के या उत्तराखंड के, यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। एक सही तरीके से मतदान हो सके, एक सुचारू मतदान हो सके। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता इतनी है कि उसमें ऐसी स्थितियों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और एक समावेशी चुनाव करार पाना एक चुनौती मानते हैं आप निर्वाचन आयोग के लिए? बहुत कॉम्प्लेक्स स्थिति है। इसीलिए जब कोई इसका एक आलोचना होता है कि 7 फेज क्यों हो गए, तो मुझे इस बात की एहसास है कि हमारे देश जैसा बड़ा और विविध, जैसा आपने कहा, इस देश में, और जो तरह तरह की आप देखिए मौसम के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, लोगों की रहन सहन के तरीके के हिसाब से सब जगह अलग अलग है और सबको मिला के आगे बढ़ना पड़ता है। तो इलेक्शन कमीशन के सामने जो काम है बहुत ही जटिल है। और नॉर्थ ईस्ट का खास करके आपने जिक्र किया, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में तो शायद एक छोटा सा लेक है जिसमें स्कैटर्ड आइलैंड को लेकर एक पुलिंग स्टेशन बनाया गया है। बहुत जगह में, अरुणाचल एक्सेट्रा जगह में लोगों को कई दिन वॉक करना पड़ता है पोलिंग पार्टीज को पहुंचने के लिए। और जैसे मणिपुर में कुछ स्थितियां थे, मणिपुर में इसलिए 2 फेज इलेक्शन करना पड़ रहा है क्योंकि वहां स्थितियां कुछ अलग तरह की है। तो हर जगह को देख के नॉर्थ ईस्ट का जिक्र बहुत सही मायने में आपने किया। ऐसे ही दुनिया और भी जगह है, हिमालयन टेरेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। लेकिन एक भारतीय चुनाव की एक विशेषता है, कहां एक भी वोटर है ना वो छूट नहीं जाए। कोई गिर जंगल के अंदर एक जगह में एक वोटर के लिए एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, इस तरह का। तो इसको जब आप साथ में रखते हैं तो आपको निर्णय लेना पड़ता है इस तरह की। And election commission, while announcing the schedule,
had warned about 4 M's: muscle power, money power, misinformation, and violation of model code of conduct. Today, we have a report from our correspondent, Akashvani correspondent, Durgesh, on illicit flow of money during elections. In a bid to combat the pressing issue of money power, the Election Commission has initiated proactive measures that are aimed at curbing illicit practices during elections. It has directed enforcement agencies to intensify their efforts to crack down on activities involving the movement of illicit cash. Agencies have been tasked with preventing the inflow and distribution of various items, including liquor, cash, freebies, and drugs. The poll body has also instructed them to target the masterminds running such operations. The Commission has also stressed the need for ramped-up vigilance over online cash transfers to prevent any attempts at manipulating the electoral process. The Election Commission's list of measures also includes prohibiting the movement of cash in bank vehicles after sunset and increasing surveillance of non-scheduled chartered flights. To ensure effective coordination and real-time tracking of illicit activities, route chart for cash, liquor, and drug flows have been identified. With these proactive measures in place, the Election Commission aims to safeguard the integrity of the electoral process and uphold the principles of democracy. This is Durgesh Bhadoria for Akashvani News, New Delhi. अक्षय जी, चुनावों में धनबल का उपयोग और नकदी का खास तौर पर गैरकानूनी उपयोग एक बड़ी समस्या रहा है चुनावों में, और शराब दी जाती है मतदाताओं को लुभाने के लिए, कैश भी दिया जाता है कहीं कहीं। तो ये जो तरीके अपनाए जाते हैं, इनसे पार पाने के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां आपको इस बार लग रही हैं? बहुत सही पॉइंट आपने कहा और आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट की रिपोर्ट भी हमने सुना। ये जो 2 चीज़ हैं, 4M की बात इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेकिन 2M जो है, पहला 2M मसल और मनी। मसल पावर जो कि बहुत हावी होता था, आपको याद होगा, खास करके बिहार, यूपी के कई इलाके में और जगह में भी, वो तो खत्म हो गया। खत्म इसीलिए हुआ जब फौजियों का तैनात हुआ, ठीक तरह से सिक्योरिटी मैनेजमेंट हुआ और सबसे बड़ा ईवीएम आया। तब फिर उसके बाद उसमें जैसे बूथ को लूटने का, बक्से को लेकर भागने का, वो सब रिवाज खत्म हो गया। लेकिन जो अर्थ मनी पावर है वो अभी तक भी कायम है। उसको लड़ने के लिए एक एक्सपेंडिचर कंट्रोल के एक बहुत बड़ा सेना बनाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, जो कुछ जिक्र तो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी किया। उसका जो पॉलिटिकल फाइनेंस और कैंपेन फाइनेंस, ये बड़ा सबके लिए चिंता का विषय बना है। सुप्रीम कोर्ट भी इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ निर्णय लिया है, और लेकिन देखने वाली बात है कि 3400 करोड़ लास्ट 11 जो असेंबली इलेक्शन, उसमें 3400 करोड़ पकड़े गए थे। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन का इसके बारे में जो आगे बढ़ने का तरीके, वो धीरे धीरे मजबूत किया जा रहा है टेक्नोलॉजी लगाकर। अब हमारे साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता विजय बजाज जुड़ चुके हैं। विजय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में निर्वाचन आयोग ने 5 चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है। इन 5 चरणों में कब कब और कौन कौन सी सीट पर मतदान होगा, इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं आप हमारे श्रोताओं को? जी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने कुल 5 संसदीय क्षेत्रों में 5 चरणों में ही मतदान की घोषणा की है। इन 5 संसदीय क्षेत्रों में से 2 संसदीय क्षेत्र जम्मू संभाग के हैं और 3 कश्मीर घाटी के हैं। प्रदेश के जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 संसदीय क्षेत्र हैं। इनमें जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उधमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश के जो कुल 20 जिले हैं, उनमें से 8 जिलों को कवर करते हैं। चुनाव आयोग ने आज उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 मार्च रखी गई है और नामांकन की जांच 28 मार्च को होगी। वहीं उम्मीदवारी जो है वो 30 मार्च तक वापस ली जा सकती है। जम्मू रियासी सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को, अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को, श्रीनगर सीट पर चौथे चरण में 13 मई को और बारामूला सीट पर 5वें और अंतिम चरण में 20 मई को मतदान होगा। आपको बता दूं कि जम्मू और कश्मीर संभाग में 2-2 पूर्ण लोकसभा सीटें हैं, जबकि जो 5वीं सीट अनंतनाग पुंछ राजौरी की है वो 2 संभागों के बीच विभाजित है। 2014 और 2019 की बात करूं तो बीजेपी ने उधमपुर और जम्मू सहित जम्मू संभाग की दोनों सीटें जीती थी, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा विजयी हुए थे। जी अक्षय जी, आपने सुना
our correspondent from Jammu was talking about notification and 5-phase polling which will be held in the Union Territory. So this election, Jammu and Kashmir holds a very special place for us, because after this will be the first election after abrogation of Article 370 also, and security always remains a concern of utmost for Election Commission, as well as the machinery which is deployed in Jammu and Kashmir, which is a border state also. So what is your assessment of Jammu division? When the commission visited Jammu and Kashmir recently, very recently, just before the announcement of the overall elections, and then when the CEC addressed the press conference announcing the polls, he answered the questions on Jammu and Kashmir very specifically, because that was in everyone's mind, as you can guess. And he said that it's the commission's priority to hold both parliament and assembly elections as quickly as possible. He talked about assembly elections as well, but everything will be done in accordance with consultation with security agencies and all that, and it would be held as early as possible. And now, so you have very rightly pointed out, it's a very special situation, though we all know that situation has changed and improved of late quite a bit. But still, this justifies why for this limited number of seats also 5 phases are done, so that the government and the election commission in particular would not like anything to go wrong. Because, step by step in Jammu and Kashmir, people are moving on the path of electoral democracy. Some amount of restoration of confidence has taken place. So this is one more step. And I am sure that this time the people will take part in large numbers, and there is a good amount of outreach by the Election Commission's own agencies as well. And I am sure that it's going to be free, fair, smooth, and particularly peaceful polls in Jammu and Kashmir. That's my expectation. And we are now joined by Ms. Joy, our correspondent from Chennai. Yeah. Yes, what Tell are me. the preparations going on? Because we have all the seats of Tamil Nadu going to polls on April 19th, the first phase. Yes. Tamil Nadu will go to polls on 19th April as the notification has been announced. All the political alliances are getting final shape. Today, the AIA-DMK has finalized its alliance with the DMDK. Which is the party which was led by actor politician Vijaykanth. Now his wife Premlata Vijaykanth is leading the party. So they have been given some 5 seats by AIA-DMK. This is also the first time that BJP is going without ADMK with all the other smaller parties. And I think this is to prove the majority or to prove its strength in the state. And another thing to be noticed is that the resignation of Telangana Governor Tamilisai Soundararajan, she has rejoined the party once more, and she has become a member just a few minutes back. I think she will also be contesting in the elections. And DMK has released the manifesto, and they have showed a lot of things. 11 new faces are going to contest the polls. So this is the present scenario. Okay, thank you, Ms. Joy. Akshayji, we see that political scene is hotting up in Tamil Nadu, and there is a lot of talk about the southern push, because all political parties, including the ruling BJP, are very keen that about 129 seats which come from the southern states, they should be able to bag these seats. So, what is your assessment about Tamil Nadu? Yeah, in fact, just to add to your comment, some have been talking about a north-south divide as well. But okay, going beyond politics, we are talking things managerially here. Tamil Nadu gives the maximum number of seats in the south, that we know. And the other thing, like you just now discussed Jammu and Kashmir for security, Tamil Nadu is discussed in the context of money power. If Election Commission faces severe challenges of inducements like goodies, any amount of, in fact, freebies also, and cash as well, cash to biryani, everything, what happens? A lot of those incidents have come from Tamil Nadu. So, especially
it can be called a vulnerable state so far as cash inducement is concerned. So one of the management priorities from Election Commission of India in Tamil Nadu will be to look at money power closely, and all the quick response systems, all the coordination, technology-based exposure of what's going on, cash check, airport check, shops, and more vulnerable identifications, previous intelligence, all will be activated in Tamil Nadu much more for the reasons of restricting illegal cash movement and black money movement. कार्यक्रम में आपका फिर स्वागत है। अक्षय जी, आपने बात की, अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर जिस तरीके से फ्रीबीज दिए जाने की बात है और तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी सामने आती है कि जो फेक न्यूज़ और आपत्तिजनक बयान सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रचार के दौरान देखने को मिलते हैं, उनसे निपटने के लिए निर्वाचन आयोग की क्या तैयारियां आपको लगती हैं इस बार? मुझे तो ये अप्रीहेंशन है कि ये जो फेक न्यूज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा के और भी प्रबल होगा और एक बहुत बड़ा बाधक बनकर ये उभर रहा है और उभरेगा भी। इसको आप नकार नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे निपटाएंगे उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले विनय जी बता रहे थे 4M में एक एम है मिस इन्फॉर्मेशन। उसको भी लगा है कि एक चैलेंज जैसा कमीशन ने लिया है कि इसको फाइट करना है, लेकिन उनका अपना ही सेना तैयार है। जो फेक न्यूज़ के लिए उन्होंने यूनिट बना कर रखे हैं, जो ओरिजिनेटर ऑफ फेक न्यूज़ उसको कैसे कैप्चर करेंगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इन्होंने एकदम मोबिलाइज किया है। मैंने आज एक न्यूज़ देखा था, एक जो बहुत बड़ा एक मेटा है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे करेंगे कि हम जैसे भी हो इन लोगों को बहुत जल्दी जो गलत तरीके से चीजें आएंगा उनको उतार देंगे। आईटी एक्ट में जो सेक्शन 79 है उसका मुझे लग रहा है कि जिक्र और उसका यूज बहुत करेगा इलेक्शन कमीशन की इंस्पिरेशन पर या कहने पर, क्योंकि जैसे कि कुछ भी गलत हो गया तो उसको तुरंत एटलीस्ट प्लेटफॉर्म से निकाल दिया जाए ऐसे। लेकिन ये जो फाइट है ना, मिस इन्फॉर्मेशन और इलेक्शन कमीशन का पुश है कि इसको रोकने के लिए, ये फाइट बहुत रोचक होगा और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जरूर इसको निपटेगा किसी ना किसी तरह से। जी, और असम में गुवाहाटी से हमारे संवाददाता मानस प्रतिम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जी, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, तो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा या उनके नामांकन से जुड़ी कोई ताज़ा जानकारी आपके पास है अभी तक? जी, आज तो किसी भी कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है, लेकिन भाजपा ने 500 सीटों पर अपनी उम्मीदवार घोषणा की है। साथ ही कांग्रेस ने भी लखीमपुर सीट को छोड़ के बाकी 3 सीटों पे अपनी प्रत्याशी घोषित की है, और डिब्रूगढ़ सीट जो है अपर असम में, ऊपरी असम में, वहां पे असम जातीय परिषद से के जो प्रमुख है लुरिन ज्योति गोगोई के लिए सपोर्ट में आए हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया अलायंस की तरफ से 4 सीटों पर अपनी उम्मीदवार घोषित की गई है, और भाजपा 5 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने भी वहां 2 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी घोषित की है, लेकिन आज पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। जी, राज्य में सीटों के भौगोलिक परिसीमन के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव है। परिसीमन के बाद इस चुनाव में क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, कुछ तो डेमोग्राफिक चेंजेस तो होंगे यहाँ पे, और जो वोटिंग पैटर्न होंगे इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक वाइज, तो उसमें उस पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। जैसे और कुछ सीटों का नाम भी बदल दिया गया है। जैसे पहले कलियाबर सीट था, उसका नाम अभी काजीरंगा किया गया है उस सीट का नाम। जैसे तेजपुर सीट था पहले ऊपरी असम में, जो सनीतपुर किया गया है। और साथ में ही अगर हम लोग बरपेटा की बात करें तो बहुत सारे विधानसभा जो सीट है वहां से हटा गई, अब दूसरे सीट जगह पे लगाया गया है। कलियाबर सीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौगांव के साथ पैच किया गया है। तो ये इतने तो बदलाव आए हैं। अब इसमें वोटों में क्या तब्दीली आती है, वोटों में क्या बदलाव आया है, उसके लिए हम लोग को थोड़ा देखना होगा, इंतजार करना होगा वोटिंग तक या गिनती तक। लेकिन हाँ, जो पहले सीट से वो ऐसे ही नहीं रहे, कुछ इधर से उधर गए हैं मतदाता, और थोड़ा सा बदलाव तो इसमें जरूर हुआ है। And Akshay ji, you were listening to our Akashvani correspondent from Guwahati. Northeast has always presented it's not only in very enchanting region, but challenges from Northeast for holding elections, and particularly because of its very typical demography.
it all has always presented challenges for the administration, for the election commission also. So how do you see the Assam, and we have some seats going in for polls on first phase, like we have 5 in Assam, then we have in Mizoram 1, we have Meghalaya, Manipur, and similarly the tiny state of Sikkim also. So how does election commission reconcile to this region? Well, I think Election Commission is an old veteran in this. I think they have been conducting election for more than 7 decades, starting from 1951. And Northeast has always been a part of it. But I must also point out one thing, that the challenges, if you would have seen yourself as a journalist observer, the challenges have been generally over a period of time tackled better and better. It has challenges because of the terrain, because of, as you said just now, a small ethnic and tribal groups within groups. And that is why we are finding, whether elections or not, some type of ethnic conflicts have been going on here or there in small pockets. And they are finding their own resolutions within the constitutional framework of the country. But they can spill over to elections sometime. Just now, I think a mention was made about delimitation. The delimitation, fortunately, has been a wonderful exercise by the Election Commission of India and the Delimitation Commission. It has worked out well, and anything relating to that, there is no hangover as such. There can be a change in voting pattern, but there is no hangover in terms of difficulties. But there are international borders also. And there are, in some places, there are problems of drugs. There are problems of extremist violence still lingering. So all these are there. But the Election Commission does, I just mentioned about 2 years time taken. They make a visit to each and every place where there is any vulnerability. And do you know that the security forces, when they move from one place to the other, wherever there is some more difficulty and anticipation of problem taking place, they do flag march there before. They do what is called, actually, they capture the area in their control so that there is no nefarious activity takes place. So I'm sure that, and the other thing is, politically, most of these northeastern, some of the groups which looked like separatist groups have come into the mainstream. So that helps the election process also. Right. And I don't expect anything very disturbing coming out. Right. In the management of these elections. So, Akshay Rao ji, you discussed various issues and enlightened our listeners with your valuable inputs. Thank you so much. कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे संवाददाताओं और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप लोकसभा सीट की तय तिथि पर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये कार्यक्रम श्रोताओं आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com or at WhatsApp on 9289094044. With this, we conclude this program. We'll bring you more election-related news and political developments tomorrow at same time. Namaskar. Namaskar.